अच्छा जी, we finished value proposition here. ठीक है कि आपने कस्टमर को और बिजनेस को कौन से अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं to explain the value so that the value makes sense to them, and we described both of them, and then you go and you test your hypothesis. So जब आप प्रोडक्ट या सर्विस बनाने शुरू करते हैं तो you have to test your hypothesis in the market. और इसका प्रोसेस ये है कि पहले तो आप आते हैं, so you know the value proposition, और उस value proposition पे बेस्ड आप बनाते हैं minimum viable product. Minimum viable product वो होता है जिसकी इतनी वैल्यू होती है so that the user can see it. अगर उसमें वैल्यू है ही नहीं, nobody will look at it or test it. इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि लोग उसको उसमें कोई फायदियत समझें. ठीक है, so you create a minimum valuable product which is ये जो ग्राफ है एक तरफ वैल्यू और एक टाइम है. so आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के तो उसको टेस्ट करना शुरू कर दें मार्केट में. जैसे आपको फीडबैक आता है आप उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जाए until it is accepted कि जी इस प्रोडक्ट के अंदर तमाम चीजें हैं, and that's where you make the whole product and it goes out into the market. ठीक है, so लोग आपसे पूछते हैं what is your MVP, what is your value proposition, what is your business model. सारी टर्म्स का आपको पता होना चाहिए and you should be able to explain in layman terms to them. So you need to create a minimum viable product जिसकी वैल्यू लोगों को समझ आ जाए. And here is a summary of the value proposition. उसके 3 components that must be made clear as to why your product is unique. And then you write, test, iterate, prototype, test, iterate until you get it right. और ये द लीन स्टार्टअप जो किताब है वो बेसिकली यही कह रही है कि भाई आप एक आइडिया को लें, जल्दी से इम्प्लीमेंट करें with the resources you have, and then keep taking corrective action until you get it right. Don't spend too much or don't put too many resources on it, because आप जितना भी करेंगे जब आप कस्टमर के पास चीज फेंकते हैं ना, you can never predict क्या होगा. तो आप जल्दी से उसका एक्सपोजर देते जाए और करेक्टिव एक्शन लेना शुरू करिए. All right, okay, that finishes the portion on value proposition. Let's now talk about एक second. Let me see how I go back. Yeah. All right. As I told you, you'll keep seeing these. Okay, I want to introduce Faisal Zahid to you today. Faisal Zahid is from BIT 7, or is from the first class that I ever taught entrepreneurship. इनको entrepreneurship बनाने में उस वक्त मेरा हाथ इसलिए नहीं था क्योंकि इन्होंने second year से ही काम शुरू कर दिया था. But he was the first one to write a first shooter game. याद रखें उस जमाने में गेम लिखना बड़ी बात थी. मैं 2008 की बात कर रहा हूँ. And for a year he went to Stanford और वहाँ उन्होंने 1, 2, 3 इस तरह स्टार्टअप्स में और वहाँ भी काम करना शुरू किया until he teamed up with someone to create Swagable. और Swagable was a great concept और इन्होंने जो है ना वेंचर कैपिटल से अच्छा खासा फंड रेज किया था, perhaps to the tune of $1 million. और फिर इन्होंने अपनी कंपनी की मार्केट वैल्यू को $15 million तक लेके गए. And beyond that, scaling beyond that was not feasible.
सो दे सोल्ड इट। और उसके बाद फैसल अब इज एडमंड हिलरी फेलो, इट्स न्यूजीलैंड बेस्ड फेलोशिप, जिसके अंदर उन्होंने सारी मुल्क से, सारी दुनिया से 60 लोगों को चूज किया। He is one of them. And he is working as a fellow there. इनकी जो बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी थी क्राफ्टी पिक्सेल्स, उसको अभी तक चला रहे हैं। एंड यू नो ही फिगर्ड आउट, अपनी तबीयत देख के और अपने स्किल्स देख के इन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन ढूंढ लिया हुआ है, और ये अपनी जो चीज़ें ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। And one of them is travel. So he travels a lot also. ठीक है? So that is introduction to Faisal Zahid. ये वाली आप पहले देख चुके हैं। So let's now talk about resources and capabilities. क्योंकि जब हम कहते हैं कि जी एंटरप्रेन्योर्स के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो वाकई कम होते हैं, तो बट उनकी कोई क्वालिटीज होनी चाहिए। So let's talk about the types of resources. First, the definition. If it can help an organization, it is valuable. If it is not available to all, it is rare. If it is not easily duplicated, it's hard to copy. And if it's not the same as the resources of another firm, it is non-substitutable. और आपका जो the entrepreneur, he or she acquires resources and skills at an appropriate cost, ठीक है, and then transforms those resources into a product or service, deploys and implements, and if successful, they create value and generate wealth. So ये जो आपने एक छोटा सा हाथ में पौधा लगाया है, it becomes माशाल्लाह a fruit giving tree. Okay, and my prayer for all those who wish to get into that is I hope you are successful. Now resources कितने types के होते हैं? When we talk about resources, let's talk about types of resources. So we have physical, reputational, organizational, financial, intellectual and technological. और अगर आपने इनका रट्टा लगाना है तो लेफ्ट साइड से देख लें तो लफ्ज प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो इतना आसान लफ्ज है याद करना कि फिर सवाल नहीं आएगा। All right, now physical resources, let's go through all of them. सबसे पहली चीज physical resources, that's tangible property. Tangible property वो होती है जो कि आप फील कर सकते हैं, it's tangible. और इसकी अगर broad categories देखें तो plant and equipment, because if you are into an industry you need to have the plant and equipment which is tangible, so that's a physical resource. It gives you an edge if the others don't have it. Then location and amenities. Location is quite important. आपने कभी नोट किया है कि दुकान जो कॉर्नर प्लॉट पे होती है, घर जो होता है कॉर्नर प्लॉट पे, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है just because of the location. So location is important. वैसे लोकेशन के एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप क्योड़ा गए हैं सॉल्ट माइन, तो सॉल्ट माइन में आप जब सैर कर रहे होते हैं अंदर, तो एक नाली साथ जा रही है, उसके अंदर पानी नहीं होता, वो ब्राइन है, नमक है, लिक्विड, और वो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो बाहर निकल के बाहरी फैक्ट्री है, तो वो उठ के वो जो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। इन दिस केस लोकेशन इज सर्टनली एन एडवांटेज to that factory out there. ठीक है, and lastly natural resources. Natural resources अगर आपके मुल्क में है तो उससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। अलबत्ता let me also tell you the case of Japan. जापान के पास natural resources बहुत कम है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो natural resources हैं उनके बारे में उनको पता है, and therefore they use their knowledge to create products. तो जापान के पास, जापान दुनिया की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाता है, लेकिन उनके पास लोहा नहीं है। उनके पास, उनको ये पता है कि लोहा कहाँ से आ सकता है
और उनको ये नॉलेज है कि गाड़ियाँ कैसे बनाते हैं। तो और हम लेट से अगर हम कपास बेचते हैं, हम लोग कपास काफ़ी उगाते हैं बेचते हैं, लेकिन जो लोग उस कपास को हमसे खरीद के उसके अंदर अपनी नॉलेज डाल के और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, देयर प्रॉफिट इज मोर देन व्हाट आवर प्रॉफिट इज। ठीक है, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी, जो आपको नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं। आप लोग भी, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज and you're gaining knowledge, so please use that to yours and society's advantage. All right? Okay. So ये natural resources की बात है। फिर ये सवाल आप हर चीज़ पे आप ये सवाल ज़रूर उठाएं कि physical resources, ये जो चार इनकी है प्रॉपर्टीज, इन चारों प्रॉपर्टीज पे ये उतरता है या नहीं होता। नेक्स्ट इज रेपुटेशनल रिसोर्सेज, और रेपुटेशनल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देखें क्या दी हुई है। परसेप्शंस दैट पीपल इन द फर्म्स एनवायरनमेंट हैव ऑफ द कंपनी। व्हाट इज अ फर्म्स एनवायरनमेंट? एक तो आपकी अपनी कंपनी की एनवायरनमेंट है, फिर आपके इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट है, और फिर आपकी कस्टमर की एनवायरनमेंट है। तो हर कंपनी के लिए वो फर्क होती है। जो लोग लेट्स से एडल्ट्स के कपड़े बनाते हैं, उनकी एनवायरनमेंट फर्क है वर्सेस दोज लेट्स से फर्म्स दैट मेक चिल्ड्रंस क्लोथ्स और दोज हु मेक स्पोर्टिंग क्लोथ्स। सो उसके अंदर आपकी एक रेपुटेशन हो जाती है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन लाइफ your reputation is the most important asset that you have, क्योंकि आपको रेपुटेशन बनाने में बड़ी देर लगती है। और एक चीज याद रखें, रेपुटेशन जो है, your ideally speaking your name should be your reputation, not your title, and your name should be your recognition, not your title. क्या आपको पता है कि अब्दुल सत्तार अली का क्या टाइटल था? नहीं पता। स्टीव जॉब्स का भी नहीं आपको शायद पता। वाई? क्योंकि उन्होंने अपने नाम को इस मकाम पे ले गए कि उनका नाम ही काफी था। ठीक है, नेल्सन मंडेला देख रहे हैं तो आप हिस्ट्री में देख लें बहुत सारे। सो आप टाइटल्स आर गुड, but it is your name and the reputation that goes with it that is more important. ठीक है, so reputation is extremely important, और reputation जो है वो आपके प्रोडक्ट लेवल पे जब आपकी हो जाती है तो it leads to brand loyalty. मैं तो होंडा ही ऐसा, and I know people, and I पहले ही मैंने शायद बताया हो कि लोग पुराना होंडा ले लेते हैं और नई मोटरसाइकिल दूसरे की नहीं लेते। Why? Because there is a reputation of Honda motorcycle. इसी तरह आपकी जो कॉर्पोरेट लेवल पे ग्लोबल इमेज बन जाती है। जब एप्पल ने अनाउंस किया कि जी हम फोन निकाल रहे हैं, तो लोग बड़ी एंटिसिपेशन में बैठ गए थे कि भाई चूंकि एप्पल निकाल रहा है फोन, इसलिए इसके अंदर जरूर कोई अनोखी चीज होगी और बड़ी आसानी से हम इस्तेमाल कर सकें। ये उसकी कॉर्पोरेट इमेज बन चुकी है। अब एप्पल ने सिर्फ ये कहा है कि जी हम गाड़ी बना रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहे हैं या कार बना रहे हैं, तो सारी दुनिया वो स्पेकुलेशन हो रही है कि जी वो एप्पल की गाड़ी कैसी होगी, क्योंकि जरूर इसके अंदर को बड़ी अनोखी चीजें होंगी और हम बड़े आराम से उसके अंदर बैठ के, और हर चीज क्वालिटी की होती है। ठीक है, पर एंड दे सरप्राइज यू। आई वंस लेफ्ट एन आईपैड इन द कार इन द हीट, और वो इतना गर्म हो गया था, तो मैंने जब उसको ऑन किया तो उसके ऊपर मैसेज आ गया कि जी टेम्परेचर इस वक्त एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये ठंडा होगा फिर ऑन होगा। आई वाज सरप्राइज्ड कि जी उन्हें देखकर किस लेवल तक सोचते हैं और चीजें पूरी रखते हैं क्वालिटी के हिसाब से।
ओके अच्छा, सो इसके अंदर रेपुटेशन के अंदर आप देखें आपकी 3 जो है एट्रीब्यूट ये आपकी रेपुटेशन को बनाते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी, इट्स नॉट प्राइस, इट्स क्वालिटी। आप जिस चीज के साथ क्वालिटी को एसोसिएट करते हैं रेपुटेशन। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, क्या ये दगा दे रहे हैं लोगों को? आपने कभी इस तरह नहीं सोचा कि जी वो स्टीव जॉब तो चोर था, कभी आप इस तरह नहीं सोचते। और तीसरा फाइनेंशियल साउंडनेस, कि जी इस कंपनी में इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी। बाय द वे एप्पल हैज सो मच मनी नाउ, और के मतलब वो हुकूमत को पैसे दे सकती है, ठीक है। ओके, सो फॉर्चून मैगजीन ने रेपुटेशन के हवाले से ये क्राइटेरिया बताए हैं। सो आप इनको देख लीजिएगा एंड देयर ऑल, आप पढ़ लें, समझ लें। या आखिरी सेकंड लास्ट देख लें, एबिलिटी टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन टॉप पीपल। ये जो कंपनी होती है इनमें जब आप जाते हैं तो आप ये फिक्र नहीं करते कि तनख्वाह क्या दे रहे, आपको खुशी होती है कि आपका नाम उनके साथ एसोसिएट है। Now let's go to the next most important, which is the organizational resources, and again these are intangible. Intangible का मतलब ये भी आप फील कर सकते हैं but you can't really precisely measure them. और ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन काम किस तरह करती है, इनके रिपोर्टिंग सिस्टम्स क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये डिसीजंस कैसे लेते हैं, हर एक की सुनते हैं नहीं सुनते, ठीक है। ये जो चीजें हैं ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। से प्लान करते हैं इनफॉर्मली, और ये देखें स्ट्रक्चर दैट प्रमोट्स एडेप्टेशन विद स्पीड कैन बी अवेलेबल रिसोर्स। इतनी यूनिवर्सिटीज आपको पता है जिन्होंने पेंडेमिक में फौरन रिएक्ट किया, आपको यू नो विद इन 2 वीक्स। लास्ट मार्च आई रिमेंबर मसला हुआ था, इन्होंने 15 मार्च को बंद किया था एंड 30th ऑफ मार्च को हम लोग ऑनलाइन शुरू हो गए विद इन 2 वीक्स। और वो क्या किया था, उन्होंने सीएस के टीचर्स को कहा था, मतलब इसके टीचर्स को, कि जी आप ऑनलाइन पढ़ाएं और हमें फीडबैक दें और हमें बताएं हम कैसे करें। इन विद इन 2 वीक्स लास्ट वाज आफ्टर एंड, ठीक है। दिस इज एडेप्टेशन विद स्पीड। आई नो अदर प्लेसेस जिन्होंने फिर जून के बाद क्लासेस स्टार्ट और दे वर स्टिल फ्लाउंडरिंग। आप अगर सिक्स को देख लें, अगर अभी कोई शख्स कहता है कि जी अच्छा आई वांट टू कम टुमारो एंड गिव अ गेस्ट लेक्चर एट 6, तो हम उसको चाय भी पिला सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं, हम स्टूडेंट्स को भी जमा कर सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता। अब एक ट्री प्लांटेशन पे कल मैं गया था, तो वहां मैंने देखा कि भाई एज ऑलवेज थिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड, इधर डायरेक्शन भी लगी थी, आगे लोग भी खड़े थे, आपको डायरेक्ट कर रहे थे, पौधे वहाँ गड़े बने हुए थे, गड़े के साथ पौधे भी लगे हुए थे, एंड द होल फंक्शन वाज ओवर इन 40-45 because we had resources and we knew how to use those resources or maximum. Very, very important. So organizational resources are also extremely important. And one main reason is the skills and capabilities of the people. And I'm actually very proud of the skills and capabilities of all the students in this. और उसकी वजह यह है कि आप ये किसी ने सिफारिश नहीं की, आप खुद on the strength of knowledge and merit we have come. Okay. ऑर्गेनाइजेशनल के बाद फाइनेंशियल आ गए। इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स?
हमारा दिमाग कहता है कि हम फाइनेंस की बात करते हैं। हाउएवर जब इसकी रैंकिंग की गई तो हाईटेक इंडस्ट्रीज ने 8th किया और सर्विस इंडस्ट्रीज ने 5th किया। आपके पास आइडिया अच्छा हो, आप पिच करें, लोग आपको पैसे देंगे। आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाए तो बैंक्स खुद आपके पास आएंगे। However, in my opinion, थोड़ा सा it depends on the state of the economy or the overall state. अभी ये पिछले 1 साल की अगर हम मिसाल लेंगे तो due to the pandemic, all those companies that had cash reserves, they faced it much better than the others who did not. Because all of a sudden a cash crunch आ गया था. So it does. फाइनेंस की जो इम्पोर्टेंस है, जब एक्सट्रीम केसेस होते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज आप और स्पेशली आप कितने लिक्विड हैं, कितनी जल्दी आप अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिनके पास ज़मीनें हैं, अगर कोई ज़मीनें नहीं खरीद रहा और आपके पास कैश नहीं है, यू स्टिल हैव अ प्रॉब्लम, राइट? So it depends on the state of the economy. There are 2 companies that are very cash rich. Next we go to intellectual and human resources, or it is the collective knowledge, training and experience of the team and the individuals, the entrepreneurs, social skills, and that for recognizing opportunity. So that you must be able to read the environment quickly. ये अपॉर्चुनिटी किस चीज की है? अब आप सोचिए पैंडेमिक में मास्क की कितनी अपॉर्चुनिटी निकली। अब तो डिजाइनर मास्क बन रहे हैं। रिलेशनशिप कैपिटल, नॉट व्हाट यू नो बट हु यू नो, बिकॉज हु यू नो कैन ओपन डोर्स, कैन ओपन कनेक्शंस। तो आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए who can also who know other people, who can help others. And lastly is technological resources, कि भाई आपके पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज कितने हैं, लैब्स कितनी हैं, because that will eventually lead to intellectual property. And the importance of intellectual property is कि आप अगर 100 रुपए की रैम खरीदते हैं ना, तो देयर इज अ गुड चांस उस 100 रुपए में से 30 रुपया जो है वो किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मद में मिल रहा है। Every time an Android OS is sold, Microsoft makes money. Every time. क्योंकि कुछ पेटेंट्स हैं जो कि एंड्रॉयड ने उनसे लिए हैं माइक्रोसॉफ्ट से। Every time a sale is made, Microsoft makes money. That is how important intellectual property is, and that is also one of the reasons why the US outsourced its manufacturing. पैसे ज्यादा नॉलेज से बना रहे हैं, ठीक है? So we're talking about, we've talked about all 6, और ये जो है ये उसको समराइज कर रहे हैं in terms of rare, valuable, hard to copy and no substitutes. और इसके अंदर अगर आप देखें, both the intangibles, your reputation and your organization are the most important, because हर कैटेगरी के अंदर yes आ रहा है। ये क्या है? के is कभी कभी, ठीक है? के is sometimes. So sometimes yes, physical resources are rare, but not necessarily so. But reputational resources and organizational resources are extremely important. मजे की बात यह है कि इनके ऊपर इतनी जल्दी एल्गोरिथम लिखा भी नहीं जा सकता, ठीक है? Okay, so that ends
the chapter on resources and capabilities. Very quickly, I'm going to introduce the next one, which is BMC. Okay. So सबसे पहले आप सीक्स की एंटरप्रेन्योर से मिल लें. She is Sumaya Irfan from BW5, and guess what she's doing? She's an Instagram influencer. And how many followers does she have? 109,000. When I first made this slide, she was at 89K, I think. And she helps a lot of major companies also, or they employ her. भाई ये आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जिंगल्स भी बनाएंगे. और आपके 3 सीट्स के हैं वो फोटोग्राफर्स हो. एक फोटोग्राफर है, एक फुरकान फोटोग्राफी है, एंड द मोस्ट वेल नोन इज अली चौधरी, क्वाइट अ फेमस व्लॉगर. ठीक है. ओके, सो दैट्स द 6 entrepreneur. So let's now talk about the business model canvas. Canvas क्या होता है? Canvas वो पेज होता है या खाका होता है जिसके ऊपर आर्टिस्ट अपनी तस्वीर बनाता है. Now जब भी आप when you have to paint on a canvas, what do? आप उस कैनवस के हिस्से करते हैं और आप तस्वर करते हैं. लेट्स से आपने लैंडस्केप बनानी है तो आप कहते हैं कि जी ओके, लेफ्ट साइड पे पहाड़ आ जाएंगे, इधर दरख्त होंगे, इधर लेक होगी, इधर बादल होंगे, इधर बेंच होगा, इधर फूल होंगे और इधर लोग बैठे. ठीक है. सो you visualize the various parts of the canvas, and that you visualize it first. And once you visualize it, then you start putting those pieces together. That's how printing is made. Similarly, जब आपको एक बिजनेस आइडिया आता है तो आपको उसका बिजनेस मॉडल बनाना होता है. फॉर्चुनेटली फॉर यू, उस बिजनेस मॉडल को बनाने के लिए किसी बहुत सारे लोगों ने बैठ के आपको एक कैनवस दे दिया जिसके 9 हिस्से हैं, और आप उन 9 हिस्सों को जब आप पूरा कर लेंगे तो आपका बिजनेस मॉडल बन चुका होगा. यह आपके लिए बहुत आसानी होगी. सो लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल कैनवस, और मैं आपको एक फिर वीडियो भी दिखा दूंगा. ये लिंक्स भी आपके LMS पे आ जाएंगे. सो व्हाट इज द बिजनेस मॉडल? A business model describes the rationale. रैशनली आप समझाते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करती है, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स वैल्यू. हर चीज में देखें वैल्यू आती है, बिकॉज वी पे फॉर वैल्यू. एंड ग्राफिकली दिस इज हाउ इट इज represented. You create a new kind of juice or a drink, and therefore you have to deliver it to the customer. The customer enjoys it, pays for it, and you generate value. कहते हैं ना, create, deliver, and capture value. It's all about value. ठीक. So business model canvas जो है is the tool जिससे आप अपना मॉडल बनाते हैं. So you can create a new business model, or you can simply analyze existing models and update them. Business model as opposed to the business plan. पहले लोग प्लान लिखते थे, 30-30, 40-40 सफ़ों के, और ये भी फिगर दें जी, ये भी दें, ये भी करें. और पहले 2 साल आई थिंक मैंने ये क्लास में ये बनवाए. Nobody reads them.
Actually, nowadays nobody has the time to read. ये कैनवस जो आपकी पेंटिंग होती है वो आप उसको विजुअली देखते हैं, इसी तरह आप बिजनेस मॉडल कैनवस को भी समझ लें, विजुअली देखेंगे ऑल द डिफरेंट पोर्शंस। और आप देखें कि ये बहुत सारी कंपनी जो हैं वो ये इसको बना रही हैं, इसको इस्तेमाल करती हैं, वेरी हाई एंड कंपनी। I will come to I will show you these. आपको आज कम से कम एक वीडियो तो मैं भी दिखाऊंगा। और इसके ये 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, and these are the building blocks that we are talking about. Okay, you start from the right hand side with these 5. भाई आपका ऑफर क्या है, कस्टमर सेगमेंट्स किसके लिए है, आप इन तक चीज कैसे पहुंचाएंगे और आपका इनके साथ रिश्ता क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप्स, और इनके साथ आप किस तरह पैसे लेंगे। जब आपने राइट साइड सोच ली है, देन यू हैव टू वर्क ऑन द लेफ्ट साइड, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल डू इट। आपको क्या की रिसोर्सेज चाहिए, आपको क्या की एक्टिविटीज करनी होगी, और आपको किन लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी होगी, और इस सारी की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। एंड देन द रेवेन्यू स्ट्रीम मस्ट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट स्ट्रक्चर so that you can make a profit. It's as simple as that. ठीक है, अच्छा, let's see the video now and let's see if I can get it to work. और ये जो वीडियो है ये जिसने बनाई थी ना, पुराने टैब जिसमें खोलते हैं, let me try again. कीबोर्ड से कर रहे हैं, कीबोर्ड से कर रहे हैं। हाँ, help me. But I still need to open this ना, ताकि मुझे उसका URL तो पता चले ना। कौन सा खोला? सारा खुला था। आपने चलें आप ओके इसको देख लें। वैसे जो है ना 6 मिनट का जो सब एक्सप्लेन करता है वो ये वाला है, सबसे ऊपर वाला ये। हाँ सॉरी, आप इसको देखें। इधर क्या, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, या नहीं, कंट्रोल से करें, कंट्रोल हो गया था, इसलिए क्लास में हो गया था, लेकिन वो उसने कंट्रोल से किया था। आप कंट्रोल दबाएं, लेट मी जस्ट प्रेस दिस। अच्छा, लेट मी, ये इससे नहीं होगा, ये जो है पॉइंटर जो है ये नहीं, एक वही चीज है। खैर, आप इसको कैन यू टाइप दिस, ये तस्वीर ले लो इसकी, वहाँ पे टाइप कर लो। एरिया आ गया। सॉरी फॉर द डिले।
for you folks at home. उसमें क्लिक कर एड्रेस बार में ऊपर. Okay. https://www.youtube.com Okay. /watch question. V is equals to capital R small e, F capital I small, L capital dash A I छोटा है ये. one T capital, B capital, L capital, W small. TDL. ये ठीक नहीं लिखा हुआ. दोबारा. डैश उसके दरम्यान से. हाँ, सॉरी, क्या सजेशन थी? डैश निकाल यूआरएल में से. FIL डैश वहाँ से निकाल दें. उसके साथ ही है. हिस्ट्री कहाँ से आती है? क्योंकि अभी देखा था वो. तो अभी वाली है. तो अभी वाली होगी. वीडियो का अगर नाम याद है वो सर्च कर लेते हैं. हाँ, बिजनेस मॉडल कैनवस, ऊस्टर हाउस उसका बंदे का नाम है. ऊस्टर, OOSTR लिखें यहाँ पे. हाँ. ढूंढे. अच्छा, while we finding out, ये जो है ना, आप लोगों ने we're going to do a flipped classroom now. हर 9 सेक्शंस हैं, ठीक है. सो आपकी क्लास के अंदर 9 ग्रुप्स होंगे और हर ग्रुप में एक सेक्शन के ऊपर प्रेजेंटेशन करनी है कि इस सेक्शन के कंपोनेंट्स क्या हैं और ये आ गया. And he is the guy who invented this. So we invented something called the business model canvas. And the business model canvas is like a canvas to paint on. You can describe existing business models, you can describe new business models, you can challenge business models, and ultimately you can use it to invent new business models with the same language. Why the word canvas? Because you can paint out an existing business model or a new business model and make it tangible. So let's look into this. It's about 9 building blocks. The first building block is customer segments. You need to ask yourself, which customers are you serving in your business? Let's look at a newspaper. What are the customer segments of a newspaper? Well, in fact, there are mainly 2. The readers, who want to be informed and entertained, and the advertisers, who want to reach an audience and sell something. So 2 different customer segments with 2 different jobs to be done. And for both segments and both jobs, you will have a different value proposition, a set of products and services that will help the customer get the job done. So once you know who you're targeting
and what you're offering, you need to ask yourself, how do these customers want to be reached? Through which channels? Through which channels do they want to communicate with me as a company, as an organization? Through which channels do they want to receive the goods? Is it a physical channel? Is it a digital channel? Are we talking about stores? Are we talking about direct channels? Are we talking about indirect channels? So ask yourself, how does each customer segment want to be reached? The next block is about the customer relationships you establish. So if you're a Swiss private bank, you will have a very personal relationship. A banker will try to build up a very personal relationship with a wealthy family, maybe even over generations. That will have implications on the rest of the business model because it will be people-based, very personal, but not very scalable. If you're Amazon, what do you think? Does Amazon have a personal relationship with us? Well, not personal in the sense of a private bank, but personalized because they understand our buying behavior and they recommend books to us. So Amazon will have a very automated relationship, but personalized, based on systems, based on computers, based on servers. So very different and much more scalable. Now you could also look at it in a different way. So Steve Blank uses the customer relationships to describe how you get, keep, and grow customers, which is a very important point because customers, you need to acquire them first. And once you have them, you better figure out how you're going to keep them. And if you don't have enough customers, it's not going to work out. So you want to grow. The next question is, what are people or companies that you're serving really willing to pay for? And how? Do they want to pay for something that they buy? Do they want to pay a subscription? Are they going to pay a licensing fee? And through which pricing mechanisms? Remember, we mentioned Google? Google is auctioning off their search terms for advertising. They're not just selling them. That makes them much richer than if they would just sell them. So that's the right-hand part of the business model canvas. The part that shows which value you're creating, for whom, and how you're delivering that, and how you're capturing value for yourself as an organization. Now we want to look at the left-hand side of the canvas, where we ask ourselves, how are we going to do it? What do we need to create value? The first question is, which resources do I really need to create value? Do I need factories? Do I need a brand? Do I need intellectual property? Do I need servers? What are the key things that you need to have to create that value that you're promising on the right-hand side? And then the next question is, well, we know what we need to have, but what is it that we really need to do, that we really need to be good at in our business model? Which activities do we need to excel at? Is it marketing and sales? Is it research and development? Is it managing servers? What are those activities that are crucial in our business model? And since we're in the 21st century, we're not going to do everything ourselves. We're going to work with partners. So you want to ask yourself, in addition to suppliers, who are the key partners that can leverage your business model, that can turn your business model into something more powerful? So an interesting example here is the social gaming company Zynga, which built their entire business model, or a big chunk of it, on the back of Facebook, which became a partnership. And probably Zynga couldn't have scaled so quickly without using Facebook as a partner. Now, if you know all those three elements on the left-hand side of your canvas, very quickly you can sketch out what your core costs are. And then you have a big picture understanding of the logic of your business. All the pieces that you need to create, deliver, and capture value. All those elements that are important to succeed in business. Now, that's just a concept. Let's turn it into a real tool that we can use in our everyday work.
where it really becomes a canvas on which we can paint out our business model. And I use sticky notes or a new tool called Studies to map out business models. That's very powerful because you will make it tangible. Ask yourself, what are or who are the customers? Sticky note. Well, if those are the customers, what value am I offering them? Sticky note. How am I reaching my customers? Sticky note. Oh, if that's the value I'm creating, that's the way I'm delivering it, well, what resources do I need? Sticky note. What activities do I need? Sticky note. So you can map out your entire business model, the business model you want to create or the business model that you already have. It will give you a clear picture and a better understanding of all the pieces of your business model. Thank you. Sorry for the slight delay, but what you will do is कि आपका जो online business है, उसकी Hi जो final everybody, my name is presentation Alexander होगी, Osterwalder. I wrote a book called Business Oh, Model wait Generation a together minute. with Yves Pigneur. poster And the house book is को जरा very मैं used around the world बंद कर दूं. to figure out what. So in the online business, you will present your business model at the very end of the course. और अभी आप लोग बाकी साथियों को समझाएंगे कि हर पोर्शन जो है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. ठीक है? So I'm going to, and within the next 2 weeks, we'll finish those presentations as well. All right. Thank you. Allah Hafiz.